हेलो जय जगन्नाथ। तो एबे आम डिस्कसन करबा गोटे ओबी रो आ गोटे नुआ टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल ओबी मॉडल। ओके। तो एबे आम जानिबा जे व्हाट आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ओबी। देखो इवोल्यूशन आम ओबी रो पढ़िथिले। तो एबे ओबी रो जतबेले इवोल्यूशन हे गला तो बिजनेस रे को टाइप रे एम्प्लॉई और सबऑर्डिनेट रो रिलेशन टा केबो बलिया थिला सेटा देखिया पई डिफरेंट टाइप रो मॉडल प्रपोज करा गला जे अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशंस being realized among the subordinate and the supervisor. Okay, देखिबा तो जदि हमें मॉडल कथा देखिबा देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ मॉडल, जनरली फाइव टाइप्स ऑफ मॉडल। फर्स्ट वन इज द ऑटोक्रेटिक मॉडल, देन कस्टोडियल मॉडल, देन सपोर्टिव मॉडल, देन कोलिजियल मॉडल, देन सिस्टम मॉडल। ओके, देखो व्हाट इज एन ओबी मॉडल। ओबी मॉडल कहले हम कोन बुझे ना, व्हेन वी मीट समवन इन ए कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम we often make assumption about their behavior. However, sometimes our prediction fails. It happens as we fail to analyze what affects people's behavior at a particular time or period. That is where understanding the and studying organizational behavior model comes in. Okay. आमे जमती गोटे बिल्डिंग बनेबा कि जेकोसी गोटे प्रोजेक्ट हाथକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ତ ତା ପାଇଁ प्रोजेक्ट କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ कोन दरकार ना गोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करिया पूर्व आमको गोटे ओवरव्यू दरकार जे प्रोजेक्ट आमे को टाइप रे बनेबा। आम गोटे घर तैयारी करबा तो घर रे एंट्रेंस को पटेबो, एग्जिट को पटेबो, कोठे ड्राइंग रूम रहबो, कोठे किचन रहबो। तो ये सब पे आमे फर्स्ट गोटे मॉडल तैयारी करे, देन मॉडल ऊपर ही हमरो प्लानिंग था एग्जीक्यूट करे। तो कथा हला जे आमे को टाइप रो मॉडल बनेबा। ओके, हम ऑर्गेनाइजेशन को टाइप रो होबा दरकार। देखो तो ये जो सब मॉडल रहा तो फर्स्ट वन इज द ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल ऊपर हमें डिस्कशन करबा। ऑटोक्रेटिक मॉडल कौन? ऑटोक्रेटिक शब्द ही अर्थ होची पावर। द मॉडल इज बेस्ड ऑन पावर। द ऑटोक्रेटिक मॉडल प्रोमिनेंट ड्यूरिंग 1800 1800 रु 1900 मसीहा। ओके, gave owners and managers the authority to command and form decision while they expected employees or workers to obey without question. ओके, जेतबेले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हला सेही टाइम रे ही ऑटोक्रेटिक मॉडल बहु परिमाण रे प्रचलित थिला। सेतबेले कोन होतला, मैनेजर माननकु बॉस माननकु इनबॉर्न लीडर भाबरे कोन करा जातला, प्रेडिक्ट करा जातला ओ तांकु वर्कर माननकु निज बॉस कर सब कथा को मानिबा पड़तला। द फॉलोइंग आर सम कीज कांसेप्ट दैट वर फॉलोड इन एन ऑटोक्रेटिक मॉडल। कोन कोन थिला देखिबा। Owners and managers run the company and had all the control. They made decision and gave orders. Okay, owner और managers company run करछन्ते एवं से जहाँ decision नेबे that is final. Managers followed a formalized directorship system and had the authority to command using phrases like you must do this or else. Meaning कोन, तू एटा कर नहले तते पेनालाइज करा जिवो, तते फायरिंग करा जिवो। फायरिंग अर्थ कोन, चाकरी बाहर कर दिया जिवो। Employees or workers were expected to follow orders and were not allowed to share their ideas. तुमको किसी कहिबार सुजोग मिल नथला जे तमे किसी तमरो एक्सक्यूज किसी काम करबनी, तमरो आइडिया जे तुम पाखरे किसी तुम आइडिया किसी वैल्यू नहीं ताका आगे। एम्प्लॉइज हैड टू डिपेंड ए लॉट ऑन देयर बॉसेस। कहीं एम्प्लॉय मानक निज बॉस ऊपर पूरा डिपेंडेंट करिया पड़तला, कारण बॉस जहाँ कहबो दैट इज फाइनल। ओके, मैनेजर हैड द पावर टू हायर फायर एंड ओवरसी एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। मैनेजर ही ताकर प्रति मोमेंट रे ताको सुपरवाइज करतला। बुझी पारछो, जेमते थ्योरी एक्स पीपल को ट्रीट करा जाय ना, that is McGregor theory X हम पर पढ़िबा। Many employees had to settle for lower wages and their performance was minimal as they had to satisfy the needs of their family themselves. अच्छा ताले एते सब परे से माने काई पड़ी के रहउतले only for their wages and wages भी minimal मिलुतला। कोन पे minimal मिलुतला? Because their performance is minimum। अच्छा ता performance के minimum होतला जेतबेले तांको ए भलिया एनवायरनमेंट दिया गला, पूरा निजो मैनेजर स्लेवरी टाइप रो बिहेव करा गला, तो से माने निजरो फुल एफर्ट दे पाउ नथले। ओके, जेहेतु सेमानको परफॉर्मेंस मिनिमम थिला तेणु ताको मिनिमम वेज मिलुतला। ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी कोन? मॉडल ड्रॉबैक कौन था? द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इंक्लूड्स लैक ऑफ सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेस, डिपेंडेंसी ऑन द टॉप मैनेजर एंड ऑन प्रोडक्टिव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ओके, ये सब थिला आरो ड्रॉबैक। ओके, देन जेतबेले ऑटोक्रेटिक मॉडल ये सब ड्रॉबैक आसला ताकू सुधारबा पय आ गोटे मॉडल आसला कस्टोडियल मॉडल। एक कथा विश्वास करा गला जे हुए तो आमे एते कम पैसा दोचे सेति पय एम्प्लॉय मानकर परफॉर्मेंस एते कम रहउची। आमे जते टिके अधिक पैसा दबा ताहाले मे भी सेमानको परफॉर्मेंस वृद्धि हबो, बढ़िबो। तो सेति पय कोन कला गला ना, ए मॉडल रे पैटर्नलिज्म और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऊपर अधिक ध्यान दिया गला। बुझी पारछो, मनी ऊपर जे पैसा देकरे आमे तांकर परफॉर्मेंस को बढ़ाई परिबा। बट पैसा ही कोन एकमात्र मीडियम। ओके, in an autocratic model, employees felt insecure and frustrated towards their bosses. As a result, managers began to consider the security of the employees both socially and economically. Okay,
जेहेतु से फ्रस्ट्रेटेड फील करते तो मैनेजर कौन करते बिगान स्टार्ट कले कौन करने एम्प्लॉय मान सोशल और इकोनोमिकली कौन करने सिक्यूरीटी देवाई ये सोशल एंड इकोनोमिकली सिक्यूरीटी कथा आसला तादेला मिनिमम वेजेस बट आधे आसला कौन जो तुमको साटिस्फैक्टरी वेज दिया ओके कंसिक्वेंटली इन 1930s companies introduced welfare programs which led to the development of the custodial model of OB. The custodial model aims to provide employees economic security through competitive pay and additional benefits. तार अर्थ कौन तार अर्थ है ठीक भाव में पेमेंट तो मिलला ता सहित किसी आडिशनल बेनिफिट ओके जमती रेम्यूनरेशन पीएफ ए टाइप रो किसी भी सुविधा दिगला किसी इकोनॉमिक फैसिलिटी दिगला okay the following are the points companies offer economic and non-economic benefits to the employees like high pay scale corporate cards and other incentives employees also enjoy the benefit of retirement incentive and reduce overtime को भी कमाई दिगला employees show their dependency and loyalty towards the company not to the boss को पाई और तंकर जो loyalty तला सेटा न देखे समान organization प्रति देखेले okay employees may experience greater psychological well-being okay then what are the drawbacks of this theory. Although this strategy provides job satisfaction, it can make employees less motivated to do their best. देखो money can bring satisfaction. Money satisfaction तो आनला, किंतु तांको भीतर motivation आनला नी. काम करिबारो motivation तांको भीतर आसलानी. तो तांकर productivity ना 100% कौन हलानी बढ़ी पारलानी. आमे हॉसवर्क थ्योरी जदि पढ़िबा तो ता देरे भी ए क्लियरली मेंशन जे money is not only one factor to bring motivation. Money is one of the factor ओके तो केवल मनी रे ही आमे जनक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई पारिबानी पैसा देकी सम लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज विल आल्सो स्टे इन द कंपनी टू एंजॉय द बेनिफिट्स विदाउट एडिंग मच टू द कंपनी सक्सेस इन एडिशन ओनली वेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू दिस बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज व्हिच कैन बी कॉस्टली ओके ये सब से सुविधा किए दे पारिबो केवल जो ऑर्गेनाइजेशन पाखरे रेवेन्यू जनरेशन बहुत होतिबो गोटे मीडियम स्केल रो बिजनेस पाखरे तो एते रेवेन्यू नै ना तो से ये सब सैटिस्फाई निजो एम्प्लॉय मानको हाई पे दवा किंबा समानकु हाई बेनिफिट्स दवा ये सब से करि पार नथला ओके तो ये सब रो जो ड्रॉबैक्स थला ताको सैटिस्फाई करिया पय आ गोटे मॉडल आसला दैट इज सपोर्टिव मॉडल कोन रहला आमे पैसा तो जहा जेमति दबु बट मैनेजर आ वर्कर मान को भीतर सपोर्ट रहइबो ओके जे तमे भी मते सपोर्ट करियो मु तुमको सपोर्ट करबी ओके एम्प्लॉइज प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लीडिंग टू सेल्फ मोटिवेटेड सैटिस्फाइड एम्प्लॉइज देखो ता फर्स्ट ऑटोक्रेटिक मॉडल मिनिमम वेज तापर हैला सैटिस्फैक्टरी वेज आधे रहला कोन रिकॉग्निशन ओके तुमको रिकॉग्निशन मिलला माने एथर टिके टिके देखा गला देखो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लीडरशिप माने लीडर बिगेट्स लीडर निज पछरे आ गोटे लीडर को ठिया करथला ओके देखो the supportive model relies on the leadership qualities rather than dictatorship or autocratic or economic benefits that is custodial. This model approach states that employees are self-motivated and require management support to achieve their best performance. From the Hathwan experiment, Elton Mayo and F.J. Ruthelsberger concluded that an organization is a social system and worker is critical system component. Okay, Hathwan study जो हितला तादर भी रिपोर्ट दिया जाइतला एल्टन मायो और रोथेल्सबर्गर का द्वारा ओके जे एटा होची गोटे सोशल सिस्टम एंड वर्कर मानकू आज ए सोशल जेमति गोटे फैमिली रे जेमति सेमानकू ट्रीट करा जे सेमति ऑर्गेनाइजेशन रे वर्कर मानकू ट्रीट करा जिबा दरकार दे डिस्कवर दैट वर्कर्स बिहेवियर पर्सनालिटीज एंड नीड टू कंट्रीब्यूट कंपनी सक्सेस ओके तो कौन सब की पॉइंट थला ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉइज टू डेवलप प्रोफेशनली एम्प्लॉय मानकर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देवा पई आधारे प्रोविजन रहला एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय मैनेजर्स टू रीच देयर जॉब सैटिस्फैक्शन तांकर ग्रोथ के करिवो जॉब सैटिस्फैक्शन के आनिबो ना मैनेजर आनिबो एम्प्लॉइज आइडियाज आर रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूड एंड टेकन इनटू कंसीडरेशन एम्प्लॉय कर जो आइडिया रो किछि स्थान नथिला पूर्व मॉडल गोडा करे बट आधारे एम्प्लॉय मानको प्रायोरिटी दिया गला जे तम पाखरे किछि गुड आइडिया अछि ताहले भी तमे हमकु जणै परिबा हम ऑर्गेनाइजेशन रो वेलबिंग रे ताकू व्यवहार करिवो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजर एम्प्लॉय और मैनेजर भितर गोटे गुड रिलेशन एस्टाब्लिश करिया पय ऑर्गेनाइजेशन काम कला एबे आधरे भी किछि ड्रॉबैक रहि गला कौन कंपनीज में हैव टू स्पेंड मोर ऑन रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज टू मेक देम स्किल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल तो ये मॉडल रे कोन हला जे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत गुडे खर्च करिया पड़ला निजे एम्प्लॉय मान को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करिया पय आल्सो इंप्लीमेंटिंग दिस मॉडल इन डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस सक्सेसफुल बिकॉज द सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द वर्कर्स आर डिफरेंट ओके गोटे डेवलपिंग कंट्री रे आको हमें जदी हमें कोन चाहिबा इंप्लीमेंट करिया पय एटा टिके डिफिकल्ट होतला कोन पय कारण सोशल एंड इकोनॉमिकल नीड ऑफ द वर्कर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस कंट्रीज मीनिंग सम मे नीड इकोनॉमिक बेनिफिट एंड सम नीड स्टेटस एंड रिकॉग्निशन तो समस्त तो एका चाहत नथिला ना किछि इकोनॉमिक बेनिफिट चाहूतले किछि
स्टाटस चाहूले तो समस्त एका प्रकार चाहूले तो आम कौन कले समस्त को एका प्रकार देदेले ओके माने बेनिफिट कमेदेले बट से ट्रेनिंग डेवलपमेंट करी ग्रोथ करिया चेष्टा कले ओके बट दिस मॉडल इज क्वाइट गुड फ्रॉम अदर previous models okay then asila collegial model कौन रहला ना employers and employees share equal responsibility promoting a culture of teamwork and ownership okay तो आधे कौन आसला ना employer और employee मानन को equal responsibility दिया गला जे employer पाखरे भी ता लेवल रे जो responsibility रहबो गोटे employee पाखरे भी ता लेवल रे से responsibility रहबो okay तो आधे कौन आसला ना पार्टनरशिप द मॉडल इज बेस्ड ऑन partnership. The collegial model extends upon the principles of supportive model. This model states that there are no bosses or subordinates. All employees work as collegious on a team. माने टीम रो कथा आसला गोटे टीम रे जेमती समस्त पाखरे इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए ए रो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बी रो सेही रेस्पेक्ट रे सेतिकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी रो सेही रेस्पॉन्सिबिलिटी तार अर्थ निज निज क्षेत्र रो रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमको पूरा करिवार अछि निज टीम रो ग्रोथ पाई हियर मैनेजर्स एंड एवरी एम्प्लॉय हैव टू पार्टिसिपेट एंड कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू अचीव द टारगेट रेट गोटे टीम कर दिया गला गोटे टीम लीड कर दिया गला गोटे टीम लीड निजर टीम मेंबर मानक सह इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी निज टीम रो ग्रोथ करिवो निज टीम रो ग्रोथ कले निज टीम रो गोल सैटिस्फाई हेले obviously organization goal रो भी सैटिस्फाई हबो द मैनेजर्स रोल टू गाइड द टीम एंड जनरेट पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट तो आदर किछटा की कांसेप्ट रहला कोन कोन मैनेजर्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द टीम एंड फोकस ऑन द टीम परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज फील एज इंपोर्टेंट member of the team employees take responsibility for their tasks employees are involved in important decision meeting and their opinions are valued employees become disciplined when they receive acceptance and recognition for their contribution okay तो ए सब पॉइंट रहला जेतो बेलको से माने टीम रो गोटे मेंबर कर दिया गला नो सुपेरियर नो सबऑर्डिनेट तो ता द्वारा कोन हला से मानकर इक्वल रिस्पांसिबिलिटी रहला से माने निजो को प्रायोरिटी मने गले से मानकर निजो टीम रो डेवलपमेंट प्रति ध्यान आसला जे हम टीम केमति डेवलप हो ओके तो टीम रो डेवलपमेंट सह organization development simultaneously होता ड्रॉबैक्स कौन था देयर मे बी रोल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीम मेंबर इन द कॉलेजियल मॉडल जे मु को रोल करिवि द सक्सेस ऑफ द मॉडल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट एबिलिटी टू कल्टिवेट द फीडिंग ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज ओके जो पार्टनरशिप फीलिंग ता आसीबा पई एम्प्लॉय मानको भितरे मैनेजमेंट को टेंशन थिला ओके जे पार्टनरशिप फीलिंग हम टीम तो बने देले बट सेमानो भितरे पार्टनरशिप फीलिंग रहइबो तो एम्प्लॉइज हु आर नॉट ट्रीटेड इक्वली बाय द मैनेजर वोंट कंट्रीब्यूट टू द फुल एफर्ट ओके जे टीम लीड थिबो जे मैनेजर थिबो जदि से तार टीम रो सब मेंबर को इक्वली ट्रीट न कला ताले केबे हेले भी अलगा जो माने ट्रीटमेंट भलसे न पाउछन्ते समान ताकर 100% कंट्रीब्यूट करिवे कि करिवेनी okay then the fifth one is the system model what is system model this is an emerging model employers show compassion resulting in self disciplined and self motivated एथिरा मोटिवेशन करिवार नै डिसिप्लिन को आनिवार नै employees are believe that they are self motivated and self disciplined सेमाने सब निजे निजे they are leader okay the model is based on partnership एटा भी partnership ऊपर the most emerging model today's corporate era in the system model the organizational behavior model is must to develop a positive work culture and community feeling among the co-workers okay निजर co-worker मानक भीतर गोटे positive work culture develop करिवार एटा होची उद्देश्य nowadays employees need more than salary and job security they need work that is ethical respectful and integrated with trust okay से माने कोन चाहती जो वर्क टा ethical होतिबा respectful होतिबा and integrated with trust होतिबा in this model managers are more compassionate and caring towards their team manager को compassionate और caring होबा पड़िबो निज टीम प्रति this ultimately results in the long term commitment and loyalty of the employees and the company's success गोटे कथा होची गोटे टीम रे जदी समस्त को इक्वली ट्रीट करा न जीवो जण को भलो से ट्रीट करा जीवो आ जण को सेते भलो से ट्रीट करा न जीवो तो से तो तार प्रोडक्टिविटी दे परिबोनी 100% दबोनी एवं चांसेस अछि जे से ऑर्गेनाइजेशन को भी छाड़ दे पारे जदी हमें तंको केयर एंड कंपनसेट करबा हे पारे जे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सह रहि परिबो एवं ताको भी सैटिस्फैक्टरी फीलिंग आसीबो The following are some key components following the support model. They are organization give employees all the support they need to increase their efficiency and output. Managers' role to create positively hope, trustworthiness, courage, and self-determination. Managers also make the employees feel part of the project and organization. Employees feel more inspired and meaningful and become self-disciplined and self-motivated. Also, employees become more responsible for their actions and goals. Okay, तो organization तार employee मानक सबू support दबो कोन पाई तांकर एफिशिएंसी और आउटपुट माने ता प्रोडक्टिविटी को एनहांस करिया पाई मैनेजर मानकर रोल रहइबो टू क्रिएट ए पॉजिटिव होपफुल एंड ट्रस्टवर्थीनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करिबारे एवं मैनेजर भी आल्सो मेक एम्प्लॉइज फील लाइक ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर रो काम रहइबो जे तांको ता अंडर रे जो एम्प्लॉय माने अछंती सेमानकु कोन करिवो
जे गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे पार्ट भली बिहेव करिवो ओके ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल कौन सम ऑर्गेनाइजेशन विल अल्टीमेट with limited resources may find it challenging to implement this model effectively. This model also becomes static after some time and may not change according to the evolving organizational structure. जेमती गोटे गोटे मॉडल चेंज हेगी चलला हेई पारे सिस्टम मॉडल भी एबे सिस्टम मॉडल इज ओके बट हेई पारे आगामी बिजनेस एनवायरनमेंट रे एटा फिट न होई पारे बिकॉज़ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी मच डायनामिक. ओके, this is all about different types of model. Okay, thank you.